Okay, this is one of the most interesting things that happens with Zoom is that there's this ting noise that goes on till everybody's in the room, which is usually a lot easier to manage if everybody in at the same time. When everybody keeps coming in and becomes a little difficult and noisy. But so it's exactly on time. I welcome all of you to our community of practice. Adhyayan has been holding these sessions ever since COVID, and this is our 49th session of the community of practice. What is amazing is that there have been more than 1,000 people who've regularly attended all these sessions, and really has, this is building that sense of community where we can learn from each other, share our knowledge, our practice. More important than the theory, I think, is what we actually do with the theory. And that is why what is very, very essential is to share this with each other and learn from each other. So what we began around 2 years ago was the collaborative learning studio. It was separate from our otherwise what we normally do, which is to work with schools on assessing themselves. And based on a self-reflection and a self-assessment, we actually work with schools very closely on how do we understand what we are doing and how do we know that we are a good school. So when we were doing that, it was fine. And then COVID happened. And then, of course, we realized that a lot of other is required. A lot of requirements of schools came out in terms of how do we deal with the online process of teaching and learning, and then also looking at social emotional learning. Because that was what children were going through, teachers were going through, school leaders were going through a lot. And so the idea was that, okay, let's start working together because this is our space. We are educators. These are our schools. These are our children. And while we have a immediate responsibility to the children in our school, we also have a sense of responsibility to children across the country in different schools. And how can we make sure that as educators, we have a larger remit than the classroom, our own classrooms, right? So that's where the community of practice is based. It's based in that collaborative studio. It is with the understanding that practitioners have a very, very important space, which has been neglected because the tendency is for academicians to get that, a lot of accolades and to be known as people who are to be listened to and read. But I think that practitioners have a wealth of experience, real practical knowledge of what can be done. And so as part of our collaborative studio, we've been extremely happy to work with Akanksha as one of our collaborating partners. We know, all of you know, that we're talking about preventive measures and curative interventions for student safety, mental health, and well-being. With us, we have 3 people from the Akanksha schools who we are delighted we have with us. One of them is Sheetal. I think if you can open up your, I think we can put you on spotlight for everybody. So Sheetal has been with Akanksha for 7 years to be really looking at, as a counselor, to be looking at the students' welfare and well-being. And she's going to be one of the people who is going to speak. Along with her is Satish. I'll put Satish and Rakesh on the spotlight as well, so that you can say hello to them. And as we are usually able to do, we simply hand over to our partners to speak. We've created the space, but we would like you very much to take on what you're going to do today. At the end of whatever you are saying, there's going to be an interactive session. We'll put it for everyone to have a discussion. For all those who are in the room, please remember, you can, as your questions arise in your mind, please feel free to put them on the chat so everybody can see them, and it can be, immediately addressed or addressed later, but they're all there and it's available to all of us to see. So Sheetal, without too many more statements from my end, I'd love you to take over and kick off the session. Go ahead. Thank you so much. Thank you, Kavita, for the
for the introductions, and really glad to have got the opportunity to come onto this platform, share, as well as get more knowledge so that, we can continue this work of focusing on well-being and promoting it across all the schools. So yeah, one thing I'd really like to, say before we deep dive into student well-being and safety, the topic for us for today is that would really love for this to be an interactive session, and it can be a one-way discourse, because there's a lot to learn from people in this room, and there's a lot to give as well. So please feel free to share anything that you guys might be doing in terms of student well-being, and also your thoughts, views, and opinions. They would really, really matter a lot. And let this just be an interactive space, so all of us can learn together. And with that, I'd request Rakesh or Satish to share the screen so that we can take this forward. Can you please make us the host? Sure. Done. All right, so before we start off with student safety and well-being, we'd like to take you through a small journey with us of Akanksha, and just to see through over a period of years where we started from, and the initiatives that we took up, and the impact that we have had. So we've kind of prepared a small video for that, and would like to share that here. कारण की ज्या बाकीच्या ज्या स्कूल असतात त्या फक्त मुलांसाठी असतात, पण या स्कूलमध्ये ऍज अ पॅरेंट्स म्हणून आम्हाला मुलांना जर काही गोष्टी
येत नसतील तर त्या शिकवल्या क्लास घेतले जातात आमचे. आकांक्षा जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं, फैमिली प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, काउंसलिंग वगैरह कुछ कराना है तो वो भी फ्री करवा देते हैं. आकांक्षाने आम्हाला संधी दिली आणि त्यामुळे आमचे कौशल्य बाहेर आले. मराठीमध्ये म्हण आहे, काजवा जसा प्रकाश देतो अंधारात पण, तशी एक आकांक्षा शाळा अशी आहे की अंधेरे में भी एक उजाला निर्माण हो जाता है. Yes, so yeah, so much achieved and so much to achieve. I was talking on mute, so sorry for that, but yes, so much achieved and so much to achieve. And I think the bottom line of the basis for all this achievement has always been a focus on the student well-being aspect in Akanksha. We focus a lot on that because without student well-being or without well-being of any sort, success in any area is quite difficult to achieve. And it's better to start young and recognize the importance of well-being as students so that as they become adults, they recognize the well-being for themselves and for others. So yes, as we deep dive into the student well-being aspect today, I would each one of you like to take some time. We'll be sharing a Padlet link with you and to put down all the words or sentences or anything that comes to your mind when I say student well-being, or what according to you is student well-being. If we could just have it on this Padlet link and let us see what you guys come up with. So maybe a word that comes to your mind, maybe you have a definition, maybe you have some thoughts around it, well, whatever. So you can just put whatever comes to your mind on the link. Kavita, will you be sharing the link, or Gauri? Gauri, will you be sharing the link? The link is shared in the chat. Oh, yeah, Okay. sorry. Already shared. Yeah, already shared. Yeah. Thank you for sharing. A few more responses, please. There are some people who've put it into the chat. Yeah, yeah.
Okay, I think you've got quite a few. Yes, I think we have quite a few responses here. And let us look at what these responses are. So yes, finding balance, no fear, psychological, emotional, and social happiness of children, students who know how to deal with achievement and adversity in their life, social, emotional, and physical peace, emotional health. Students feel happy and safe, confidence, emotionally strong, emotional, social, and physically sound, happy, confident students who love learning, very important. Yeah, so we have all of these responses, and all of them, I think, have, in all these responses, you have actually encompassed what student well-being actually means. And we shall move forward and see and have a look at, Rakesh, can you share screen? Let us look at the definition for student well-being. The next slide, Rakesh. Extremely sorry for this. No problem. Is it not moving, Rakesh? Ma'am, can you see the screen? It is not moving actually. Yeah, we can see the screen. Yeah. It's not moving the slide. So if you stop presenting, and then go to the next slide and start presenting from there, maybe that would work. Okay, let me see. Vara, if you have slides with you, would you like to do the presenting? Or if you want, I can share the screen. Yeah, that's what I was thinking. Can I try one more time? Sure. Are you trying now? Okay, go ahead. Next slide. Okay. Yeah. So student well-being, if I have to put it like in absolute brief, is a holistic concept which believes that student success and academic achievement are closely linked to their overall being. It encompasses of like three main dimensions, apart from a few other dimensions of physical, mental, and social emotional well-being. All three play a very important role. So what basically student well-being says is that student success and academic achievement largely depends on their overall well-being, because unless students or young adults or any one of us are not able to deal with our with any emotional concerns that we have, if you're not able to deal with or if you're not able to kind of approach concern and any situation with clarity, take decisions with clarity, or just be happy, or work around any situations that come our way, it would be difficult to meet with any success or any kind of achievement. And that's why there's a lot of talk going on around well-being, mental health, and all of these aspects in the current times. So let's look at, let's break down these three main dimensions and look at what they actually encompass and what they look like.
and then later on go on to see that how can these spaces be created in schools actually to ensure the well-being of students. The next slide. Yes, so the core domains, as in, relationship building, which would come in the social emotional well-being, would be actually around creating awareness around building interpersonal relationship skills, strengthening connections, making bonds, also having meaningful relationships, being aware about how they need to be in a relationship, what a relationship means to children, and helping them understand and develop relationships, be it with their peers, be it in the family, be it with the community around them. So relationship building would come under one of the core domains of social well-being. Physical health, again, a very important aspect and a very core domain of well-being would include, access to health supplies, sleep, routine, nutrition, how to lead a physically healthy lifestyle, how to stay physically healthy, all these aspects from it is a part, you're right, Kavita, it is a part of the overall well-being and a very, very important aspect. And hence we also include physical physical well-being into a part of our, as a part of our student well-being as well. Then we move on to strengths and resources, which would mean your mental and emotional well-being as well, which would mean like, identifying your areas of strength, developing your areas of focus, identifying, in case you have certain concerns with, say, relationships, or certain concerns with, say, having clarity in decision making, self-esteem issues, anything which helps you kind of with your self growth in order to live, in order to lead a life which kind of, in which you can kind of deal with any concerns that come across. So actually being self-aware about yourself, self-aware in terms of identifying things which and finding coping mechanisms which help you kind of deal with anything that comes your way. Then we move on to child safety, a very, very important aspect which would cover cyber safety, emotional safety, physical safety, and sexual safety. We focus a lot on child safety because safety is, one of the because safety is a very, very important aspect. Unless a person does not feel safe and secure in any environment, it is very difficult for anyone to kind of function. So it's very important to feel safe. Learning and well-being, again, would be a part of safety. It would be a part of student well-being, where you're adapting to the learning environment, seeing how motivation can increase, concentration can increase, focus can increase. Identifying your sense of purpose, creating a environment where a student feels, or has a sense of belonging to the school or the place where the person is academically connected to. So unless that environment is not established, or unless the student doesn't feel motivated, it would, learning does not happen, and then that does not lead to success. Family safety is also a very important aspect, because a child comes, you don't see a child in isolation, but comes from the family. So ensuring that there is safety in the family in terms of, again, emotional safety, physical safety, and financial safety, where a child feels insecure in all of these three areas, becomes a very important aspect of student well-being. Would like to open out for any questions that anyone might have with regards to any of these domains. No? Shall we move on?
Okay. Yeah, I think there's no question as of now. It's Yeah. So, so it's important to look at how, one deals with well-being in terms of, a preventative measure and a curative measure. So, let's look at how that actually happens. Shall we move on? Gauri. Gauri, the next slide, please. Yes, I'm trying to move the slides, but You're finding it equally difficult. yeah. Is there a problem with the slides itself, or I mean, I'm retrying it. So while we are trying to sort Yeah. the slides out, I was just thinking that family safety is something that schools may not have considered because it seems to go beyond the child into a domain that's a little wider than what schools normally cope with. Yeah. So is that something that, at some point you're going to talk more about? That would be really interesting for everyone. Yeah, we are going to talk about that in terms of how do we involve parent as partners to ensure student well-being, because like I said, the child comes from a family and, is connected to adults outside school as well and comes from a home environment. So a lot of what we see of kids is a manifestation of what goes on at home or the environment the child grows up in, be it family or the community the child comes from. Like be it any community, right? Be it like from an underprivileged community or, a higher economic community. But, there are influences, obviously, and a child walks in with that. So it's important to, have a sense of what family safety means. And Rakesh and Satish would take that up. So moving on to child safety. So we look at child safety, or we address child safety or ensure child safety in preventative as well as, taking curative measures. So for preventative measures, where we kind of ensure child safety is where we talk a lot about safety in terms of, we have this curriculum which is called as a personal safety education, which we use to impart to children about being safe, unsafe touch, or what do you do when in situations like this. We help them to identify their trusted adult, give them small strategies which they can use, create awareness around what child sexual abuse means, create awareness around relationships, especially for the higher grades, relationships, cyber safety sessions. We have open conversations around all of this with the children. We have sessions with the higher grades around awareness to prevent child marriage. In fact, we do sessions, awareness sessions with parents, addressing the impact of child marriage on the child in socio-emotional areas as well. So we have these preventative sessions, which we conduct for safety awareness. Then we have focus group interventions. So focus group interventions, so personal safety education and all of these, the preventative measures are, we run them across all grades, across all schools. That is for the whole school. And when we identify that, there are a few kids who are going through the same concerns, we have small focus group sessions in a form of intervention with them, which have a progression where we address these issues which are common among these children and work with the group, like we might do group therapy with them. We might have parents and the children together to address their concerns. So we have focus group interventions. Also, I would like to put forth that when we talk of safety, we don't only work with child marriage, cyber safety, or child sexual abuse. So we have a wide, it's like an umbrella, right? So we have a lot of issues which, a lot of situations or a lot of concerns which we involve in, a lot of
aspects that we address in safety, such as alcoholism in the house, parent suicide, suicidal ideation among students, domestic violence being some of them. And then the last part, which is the curative part, when there are situations that arise, we have one-on-one support, we have therapy sessions, counseling sessions for children to deal with whatever they have gone through, be it in terms of child marriage, be it in terms of any cyber safety concerns that might have come up, any sexual safety concerns or sexual abuse concerns that might have come up. We have counseling sessions that we have to handle children, or to take care of children, or to support children rather, after they have been through any traumatic incident where their safety has been threatened or their safety has been at stake. So yes, this is how we kind of work with child safety. Any questions around this? Anything you all would like to know? I think Genevieve has her hand up. So in fact, Sheetal also has, yeah. Yeah. Genevieve, would you want to go first? Genevieve, are you able to hear us? If you're talking, then you might be on mute, I guess, because we can't hear. I don't think she can hear us. So also, as a part of the curative measure, we do take cases that come up very seriously and, go ahead and report cases as well. Any sexual abuse case that comes up, or any case related to domestic violence, or anywhere where we feel that we need to take legal measures, we take that very seriously and extend support in terms of, we extend legal support as well, where it is absolutely required, as as something which happens after the incident. Yeah. There's another Sheetal who wants to say something. I think I can see her hand up. Hi, Sheetal. Hi, Kavita. Hi. I'm from Akanksha Foundation as well. I just wanted to add on a couple of things. One is looking at this triangle and of support. It may seem very daunting. It may seem that how, as a school that is supporting schools, children with education, how are we able to do the peer preventive and the curative as well? So I wanted to add that what we do is systemize this, right? It's institutionalized. There is no Akanksha school that does not offer child safety, that does not offer child well-being. And there is no stakeholder, as in the teachers, the school leaders, as in principal, the one social worker that we may have for the school, and the one counselor that we have, the helper didis that we have, which is the support staff. All of them, along with parents, are made aware of what is child well-being. So even before going to the children and offering this support, all the staff in the school is trained to offer this support to the children, and offer the support for themselves as well as adults. Because adult well-being comes before student well-being. If I am as an adult unregulated, dysregulated, I don't understand how to acknowledge my emotions, then I am not going to be able to offer that support. Or if I have had I have not been counseled, or I have not been seeking support as an adult for some history that I've had, then it's difficult to offer support. So ensuring that adult well-being is also, it happens, it's not like a end goal ki adult well-being happens and now we'll start with student well-being. Adult well-being is an ongoing process, and these adults who are feeling supported then offer support for the children. So this is a two-pronged, not only two-pronged, but multi-pronged approach. And the adults support children in the classes through their instructions, of course, during awareness sessions. It's a specific time before starting an English class, or there is a special time carved out. But through the day, there are many times where check-ins are done on students' emotional well-being. So this is integrated into the school day. I just wanted to share that so that it does not seem that we have an entire army which is separate from the teachers and the principal that is looking at student well-being. It is the teachers and the principals mainly,
and they're supported by one counselor and maybe one or two social workers. So it is essentially the people who are working with children who are doing this work every day. Thanks. Great point. Thank you for that. I think it is. It could look like it's a very, very well-resourced school in terms of human resources. So I think that's a good point made. Thank you, Genevieve. If you're able to speak, I can see your hand is still up. But in case at any point you can unmute and manage to get your question in, please do feel free. Yeah, go on, Sheetal. Back to you. Any more questions? Anything? Thanks. Thank you, Sheetal, for bringing that up. Yes, I mean, we integrated into our school system, and it is kind of, mandatory for schools all across to focus on safety, and everyone does it, mandate or not. So, yeah. And in fact, Rakesh will be talking more about how parents are also involved in child safety and being a part of creating awareness around safety and being a part of both the preventative as well as the curative measures. So yeah, next slide, please. So can you all kind of come up with certain spaces in school that you think can be created to support or promote student well-being in classes during academic slots, off academic slots? So would like, Gauri, could you share the Padlet link? Yeah, just Genevieve, were you able to unmute? I saw your camera come on briefly. just give me 1 sec. My screen has frozen. Okay. Farah, I've sent you the PowerPoint so that you can start it the next time that it has to start. I mean, would you like us to just put it on the chat instead, Sheetal? Yes, I mean, that'll also work, or yeah, I mean, that also works. It's all right, it's come. It's all right. I think, yeah, let's go ahead with sharing your, sharing the answers. Yeah, the Padlet has been posted as well, so people can use that if they'd like to. Yes. Thank you. Thank you for answering. Corridors, creative corners, yes. Circle time, yeah. I think we have a couple of answers here. Could we kind of go on to the next, shut the Padlet and move on? Okay. Yeah, so student well-being can be actually integrated, and thank you for answering. I think all of them actually have given in areas where student well-being, which can be
can have scope for student well-being. Student well-being actually, some of the practices for student well-being can be practiced right from having 2 minutes of or a minute of, breathing exercises or calming down, or, even before the class starts. It can be in the corridor where you teach kids to help each other, to share. It could be, encouraging students during your academics to question, to answer, so that they kind of develop confidence and develop self-esteem and know that they can reach out to you. Creating a safe space everywhere in the school is also, a part of student well-being. Apart from that, you can have certain specific places which work on student well-being, like a circle time, which is a very strong space that promotes well-being, where children can talk. They can share ideas, they can express themselves, create awareness around certain topics. So circle time is one such area to enforce well-being. The second is, can you change the slide? We have, C-learning, which is a socio-emotional ethical learning. Kavita, like I was sharing with you, that is where we've collaborated with the Emory University and adopted a socio-emotional ethical learning curriculum in school, which basically focuses on self-awareness, self-management, and compassion, and also teaches a lot of strategies and techniques to ground yourself, stabilize yourself, and kind of manage yourself when you are not feeling okay. So yeah, this is one of the spaces that we have created. Moving on, we have the student council, where we encourage a lot of, which is a part of our student voice. And we have the council members also promoting safe spaces in schools, taking that up, voicing their opinions, having conversations with the management to kind of, and are a part in a lot of decision-making process as well in a lot of our schools. Yes, moving on. I already mentioned spaces like, personal safety education, a class or a slot for personal safety education, where we teach them about personal safety, what it means with regards to even sexual safety. And now we have expanded that. We have expanded the term safety to the other areas as well, in terms of identifying other unsafe situations and reaching out to your adult is what we kind of, this is a space which we have created for that. Moving on. And like I said, we have one-on-one support, which is provided as a curative measure. So we have counseling spaces for children, Bombay, Pune, both, and Nagpur as well, where we have like 2 counselors in each school for Pune and social workers as well. So we provide one-on-one counseling, parent and child counseling, working with family dynamics in these spaces. Moving on. And here are some of the other spaces for student well-being. We have clubs, we have advisory, where there is one advisor with about 10 to 12 children, and the advisor is responsible for community visits, the overall development of the child, academic performance, any concerns the child comes up with goes, the advisor kind of supports the child and involves other stakeholders as well. Empowerment sessions, peer counseling, so a lot of these other spaces. So yeah, we have all of these spaces for student well-being, and take this up at Akanksha, because like I said, student well-being is a very important part of success and achievement and academic achievement. And we involve stakeholders in this. So it's not possible for one counselor or 2 social workers to kind of drive these spaces. So a lot of training happens with the other really happens with the other stakeholders as well. So we train teachers to handle disclosure in case a child opens up about some situation if the child is going through. We also train teachers to kind of train teachers about, say, trauma, what trauma means, how does it manifest in class, awareness around cyber safety, awareness around child sexual safety. So we'll do a lot of trainings with the teachers to create awareness, as well as to pick up and handle disclosures
in case, because they are the ones at the end of the day who manage a class of so many students. Kavita, I saw you posted a question. Yeah, I was just wondering, like, what happens to the advisors? Sort of, are they seen as accountable in case a child is not doing well, or are they, Well, they're not seen accountable as such if the child is not doing well, but they're definitely spoken to about what challenges the child is going through, or what more support can be extended to the child, or the concerns are discussed with the advisor, and then the counselors or the social workers also get involved with a particular child in case their support is required. So we kind of try and provide all the support, but the advisor basically, is the children know that if we are with this advisor, this is the person who is a go-to person, and that advisor is also in touch with the parents and knows the whole family situation. right? Yeah. So yes, moving on. I hand over to Rakesh now, but like I said, we spoke about children and we spoke about the stakeholders in school. Parents are a huge part of student well-being, because they are with the children and they are family, and it's very important that they also understand aspects of student well-being. So handing it over to Rakesh and Satish. Thank you. Yeah, thank you, Sheetal Didi, and very good evening, each and everyone who are here. Thank you, Didi, for presenting student well-being in a very good manner. And we cannot work in isolation with students. So the family is there, the children are with the parents and their families, and parents are the key stakeholders, plays crucial role for the holistic development of the children. And that's why Akanksha consider parents as partners. Next slide, please, Didi. Parent engagement for student well-being is defined parents and school staff working together to support and improve the learning, health, safety, and development of children. So here we consider parents as partners because we share equal responsibilities for the child development. So Akanksha and parents jointly work together for the development of the children. Next slide. We empower our parents through sharing and exchanging knowledge and skills with each other. So for that, next slide, please. To empower our parents and to engage our parents for the preventive spaces at school, we have many strategies, we have many activities to work on with them. For an example, I'm sharing few practices with you. We have home and community visits, parents meeting, building bridges. For the home and community visit, this is helping us to build a very good rapport with the parent, to understand the children background, and to work with the child in the school easily with his difficulties or with his problem. Teacher also works with a very positive mindset with the child in the school. Parent meeting and building bridges, I'll explain you in detail afterwards. SMC involvement is also one of the very strong work, you can say, for creating a child safe space for the children in the school. Parent volunteering is one of our key component. Parent engagement through innovative ideas. I'll explain you in details. First of all, I'll share parents meeting, building bridges. So building bridges, Didi, can we move on to the next slide? Yeah, this is one of our very good activity session, which is planned for the parents, where a platform is created for the child and parent to express their feelings. This activity has been brought because we had seen there was a very communication gap, emotional gap between the parent and child. So we had innovated this session for the parent and child to bring them together at one platform to create a
opportunity to express their feelings with each other, to understand their thoughts, to create safe environment, and to active listen to each other, and to accept each other's feelings. So here in this picture, you will see the parent and child, they have sat together, they have holded their hands, they are keeping their eye contact and talking to each other. So this atmosphere, safe atmosphere is created, facilitated by the social worker, where the emotional bond is created. Um, in this meeting, parent and child, they share their thoughts, feelings, and they accept them each other. After this meeting, we have seen lot of parents or the children, they breaks down, they share their feelings. For an example, a lot of parents is that they had not spoken to their children because they were truck drivers, tempo drivers, and they were out of houses for 10 days, 15 days. They won't be able to give time to their families. And since the children are in their adulthood also, younghood also, so they have a very communication gap with their kids. But this activity has brought them together, and they have created an emotional bond between them. They have strengthened their healthy relationships. After 10 years, the father have started talking to their son, their daughter, and even the children, they have started experiencing their parents feeling, like how their parents are equipped with the different jobs, and equipped with the different, facing different difficulties, and struggling for their livelihoods. Uh, Very sweet examples of a few children started applying ointment on their mother's feet, started working on the house, and this activity is like a very fruitful and we can say very bridging gap of parent and child for the emotional feelings. This activity has helped us to create a very safe environment for the children also at home and the school also. Let's move on to the next slide. One of our important activity of engaging parents with the innovative ideas. So every school has have different innovative idea, and innovative ideas. For an example, one of our school have uh, DNK Awaz. So YouTube channel has been taken as a medium, as a tool to reach out to the parents, and where weekly they have spreaded a message, or they make parents aware about one issue, where children, parents, teachers, staff members are involved in this YouTube channel, and they facilitate the sessions, they prepare their sessions, they post their sessions on the YouTube channel. So they are working very nicely on this YouTube channel. So for an example, in the picture you can see they have taken a domestic violence issue. So they are spreading news on the domestic violence now, where the children, parents, teachers, all of them are together jointly working on this issue now. Even Sneha is our one of the NGO with whom we are working now. They are also working with us, so they are also the part of this DNK hours. Another thing you can, in the other picture you can see the Kaladalan is one of our activity where parents are given chance to for their performances, to exhibit, to show their talent and express their feelings. These are all the activities where the parents are engaged. Uh, Again, we have in one of our school, we have started news at 7. So here the social worker is using WhatsApp as a medium, and at every day at 7 o'clock, he's posting messages, an article from the news about the child safety, nutrition, related to the child's development,
and parents are like daily reading that article and keeping that article as a WhatsApp profile and in their status also, and they're also spreading this news to their relatives or the friends. So this is also very good activities. So these are the some sort of activities where we are engaging parents daily. Few activities are happening constantly, quarterly, 6 monthly, yearly, but few activities are happening regularly. So for the next slide, I would like to call Rakesh Bhaiya to present. Kavita Didi, next slides, please. Yeah, thank you everyone. मैं क्यूरिटी स्पेसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ. मेरे पहले मेरे जो दो स्पीकर थे, शीतल दीदी और सतीश भैया ने ऑलमोस्ट चाइल्ड वेलबींग और चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बात किया है, और मैं अभी क्यूरिटी स्पेसेस के बारे में बात करना चाहूंगा. क्यूरिटी स्पेसेस चालू करने से पहले मैं जस्ट एक बताना चाहूंगा, जो बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जब हम काम कर रहे हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ और सारे स्टेक होल्डर के साथ, तो जो लूप है, अगर हम देख रहे हैं, अगर हम बच्चों के साथ कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो चाइल्ड सेफ्टी का हो, चाइल्ड वेलबींग का हो या एजुकेशन का हो, अगर हम लूप हम पूरा नहीं करते तो वो सर्कल पूरा नहीं होता, तो आइसोलेशन में चला जाता है. तो हम चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली हम टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम स्टेक होल्डर जो भी काउंसलर है, सोशल वर्कर है, स्कूल का स्टाफ है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी है, और अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट, तो ये सारा जब सर्कल पूरा हो जाता है तो जो हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा है, जो आउटकम्स रखा है बच्चों के लिए, वो पूरा होता है. और यहाँ मुझे लगता है कि जब हम प्रिवेंटिव स्पेसेस पे बात कर रहे हैं, तो क्यूरेटिव स्पेसेस का जो अगर जर्नी स्टार्ट होता है, तो अगर सर्कल अगर हमारा कंप्लीट होता है, तो हम वहां पे मूव होते हैं. जैसे एज ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेटर या हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, हम सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर भी ला रहे हैं स्कूल्स में. लेकिन अगर स्ट्रक्चर अगर हमको सस्टेन रखना है और स्ट्रक्चर के साथ अगर हमको आगे जाना है, तो हमको प्रैक्टिसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा. और प्रैक्टिसेस अगर प्रिवेंटिव से क्रिएटिव लेवल पे चली जाती है, तो उसका आउटकम और उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और पेरेंट्स भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो एज ए पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा. अगर आप देखो कि ये स्लाइड्स में तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो हमारे क्यूरेटिव स्पेसेस है, जैसे हैंडलिंग डिस्क्लोजर है, को क्रिएटर इन एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल गोल सेटिंग. ये वन ऑफ द हमारा एक इनिशिएटिव रहा है पेरेंट्स के साथ, कि पेरेंट्स और टीचर और बच्चे साथ में बैठ के गोल सेट करते हैं. नॉट ओनली एकेडमिक गोल, सोशल इमोशनल गोल भी उनके साथ सेट होता है. और इसको स्कूल स्टाफ है, टीचर है, सोशल वर्कर है, काउंसलर रिविजिट करता है कि हमने क्या गोल सेट किया था. एग्जांपल के तौर पे एकेडमिक के साथ हमने इमोशनल सोशल के लिए गोल सेट किया है, हमने उनके न्यूट्रिशन के लिए गोल सेट किया है. तो क्या बच्चा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, बच्चा इमोशनल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो उसको रिविजिट करते हैं. ये वन ऑफ द हमारी एक्टिविटी है. सीएस अवेयरनेस एंड सपोर्ट सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं पॉइंट बाकी के पॉइंटर से उसको जस्ट टच करता हूँ और मैं डिटेल में बात करता हूँ. इसके बाद हमारा रेड फ्लैग केसेस एंड सपोर्ट सिस्टम है. तो कोई भी बच्चा, अगर स्कूल का बच्चा डिस्ट्रेस है, वो थ्रेटन फील करता है, या उसको कोई भी इमोशनल सोशल अनविलिंग लगता है, तो हमारा कॉल जाता है टीचर्स की तरफ से, या हमारा टीचर और सोशल वर्कर के साथ काउंसलर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है बच्चे का, पेरेंट्स का. तो उससे हम ये रेड फ्लैग क्रिएट करते हैं कि कोई भी अगर केस है जहाँ पे हमको थ्रेटन फील हो रहा है, डिस्ट्रेस फील हो रहा है, तो हम वो केस फ्लैग करते हैं. और एक हमारा सपोर्ट सिस्टम है, सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम, जैसे शीतल है, सतीश है, मैं हूँ, ऐसे पूना मुंबई में हम सब जगह पे हमारा सेंट्रल सिस्टम है, और हम प्रॉम्प्टली उसके ऊपर काम करते हैं. तो स्कूल में सोशल वर्कर, काउंसलर और सेंटर टीम मिलके उस रेड फ्लैग वाले केस के साथ काम करते हैं. सी लर्निंग प्रैक्टिसेस, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, ये बच्चों के साथ, जैसे शीतल ने बोला बच्चों के साथ स्टार्ट है, तो हम सेम चीज पेरेंट्स के साथ भी कर रहे हैं. क्योंकि अगर एक मैसेज सिर्फ बच्चों को देंगे, बच्चे घर जाएंगे बोलेंगे स्कूल में तो हमको बताया गया था सी लर्निंग प्रैक्टिस, और पापा आप लोग तो इस तरीके से बात करते हो. तो हम चाहते हैं कि पापा और बच्चे दोनों भी एक साथ इस चीज को समझे, और स्कूल के साथ साथ घर का जो हेल्दी इन्वॉल्वमेंट है वो बरकरार रखे. पेरेंट्स क्लासेस डेफिनेटली केजी वाले में ये ज्यादा हम फोकस करते हैं, जहाँ पे न्यू हमारे लर्नर्स होते हैं, केजी वाले बच्चे,
तो पेरेंट्स को हम उनके साथ कैसे काम किया जाता है, या हम क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, घर में आप उसके साथ कैसे काम करोगे, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन, इमोशनल सेफ्टी, इन सब चीजों के साथ काम होता है। जैसे मैंने बोला पेरेंट्स क्लासेस ऊपर, जैसे मैंने बात किया था कि गोल सेटिंग वाला भी एक पार्ट है, तो पेरेंट्स क्लासेस वन ऑफ द हमारा पिलर है जहाँ पे बच्चों का एकेडमिक के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे ज्यादा फोकस पेरेंट्स पे होता है कि पेरेंट्स कैसे खुद हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। तो यहाँ पे स्कूल्स लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम हेल्दी लाइफस्टाइल के अंडर लाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा फोकस है, योगा क्लासेस के ऊपर हमारा फोकस है, मेंटल वेलबींग के लिए हमारा फोकस, चाय कट्टा नाम का हमारा फोरम है जहाँ पेरेंट्स आते हैं, हम क्रिकेट के माध्यम से भी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जहाँ पे सिर्फ हेल्दी चीजों पे बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी बात हो रहा है, एडिक्शन के ऊपर भी बात हो रहा है कि इनडायरेक्टली वो अपने फैमिली के पार्ट है। और बच्चे अगर फैमिली में रह रहे, अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में एडिक्शन का अगर परसेंटेज है, तो इनडायरेक्टली बच्चे के वेलबींग और मेंटल वेलबींग पे भी फोकस होता है। तो ये हमने इसके अंदर का कवर किया न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अभी जो हाईलाइटेड चीजें हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सेल्स अवेयरनेस, सेल्स वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव टॉपिक है, और हम सिर्फ सीए से बच्चों की तरह बच्चों तक नहीं रुकते। सीएसए को लेके हमने टीचर कैपेसिटी बिल्ड किया है, सीएसए को लेके हमने पेरेंट्स का कैपेसिटी बिल्ड किया है। जैसे आपने देखा हैंडलिंग डिस्क्लोजर जब बोलते हैं, अगर बच्चे के साथ कोई भी अनसेफ चीज होती है, तो बच्चा अगर टीचर के पास भी जाता है या अपने पेरेंट्स के पास भी जाता है, क्योंकि हमने उनको सिखाया है कि ट्रस्टेड एडल्ट कौन है, तो बच्चों के लिए ट्रस्टेड एडल्ट उसके टीचर है और पेरेंट्स है। अगर बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बता रहा है कि मेरे साथ ये अनसेफ चीज हुई है, मेरे साथ ये बैड टच हुआ है और मैं खुद को अनसेफ फील कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स और टीचर उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हैंडलिंग डिस्क्लोजर एक हमारा ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आप जब बच्चे आपके पास आते हैं, बच्चे जब आपसे बात करते हैं, तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे, आप रिएक्ट कैसे करोगे। कभी एक जनरल है कि अगर हम पेरेंट्स को देखेंगे लो इकोनॉमिक कंडीशन से आए हैं, उनके लिए जो सोसाइटी ने उनको जो चीजें बताई वो फटक से रिएक्ट होते हैं, ब्लेम वाला रिएक्शंस होता है या एंगर वाला रिएक्शंस होता है। तो हमने पेरेंट्स को बताया है कि आप इन सिचुएशन में कैसे बच्चे के साथ ट्रीट करोगे। एकदम सिंपल टू सिंपल है कि आपको बच्चों को ये बताना है कि मैं तेरे साथ हूं, बच्चों को ये बताना है ये तेरा फॉल्ट नहीं है, बच्चों को ये बताना है मैं तेरे हर स्टेप के साथ हूँ। तो उसका सेफ्टी, उसका इमोशनल सेफ्टी वो आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंडलिंग डिस्क्लोजर में हम वो बात करते हैं। से सपोर्ट सिस्टम में हम बोलेंगे, जैसे से केस आता है तो 24 आवर्स में हमारा सेंट्रल टीम उसके साथ डील करता है। हम सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी मेजर करते हैं। अगर अब्यूजर घर में है तो शेल्टर हम उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर अब्यूजर कम्युनिटी में है तो हम उसकी सेफ्टी कैसे मेजर कर सकते हैं। 24 आवर्स में हमारा वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसकी सेफ्टी। सेकेंड, जैसे हमारे पास काउंसलर है तो ट्रॉमा, अगर बच्चे ट्रॉमा में है तो या पेरेंट्स भी ट्रॉमा में है तो ट्रॉमा पे बात होता है। एंड देन हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है एक केस लॉन्च। तो हम सारे मैंडेटरी केस लॉन्च करते हैं। हम पूरा हमारा टीम बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ होता है। जो भी प्रोटोकॉल सीएसए के अंडर है, जैसे बच्चों को स्कूल में रखना है, कोई भी अगर पुलिस आता है तो वो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, फ्रेंडली उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, जब वो चाहता है तब हम स्टेटमेंट देंगे। तो उस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। आकांक्षा ने बहुत अच्छी तरीके से सीएसए का सपोर्ट सिस्टम का प्रोटोकॉल बनाया है और हम सब इक्विप है स्किल के साथ, नॉलेज के साथ किए। हम भी क्वेश्चनिंग करते हैं सिस्टम के साथ। जब अगर पुलिस अगर आप जाते हो तो उनका भी सेंसिटाइजेशन होता है, लेकिन पुलिस उस टाइम पे अलग बात करते हैं। तो एज एडवोकेटर हमको उनके साथ भी काम करना पड़ता है। तो हम सिस्टम में काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम उसका मेडिकल तक उसका सपोर्ट करते हैं। देन कोर्ट, जब केस कोर्ट में स्टैंड होता है उस समय भी आकांक्षा उनके साथ रहता है, आकांक्षा का सपोर्ट सिस्टम उनके साथ रहता है। हम लीगल सपोर्ट भी पेरेंट्स को देते हैं और पूरा मीनवाइल हम बच्चे के साथ पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। क्या हमारे सीएसए को चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, सीपीपी हम उसको बोलते हैं, ये हमारा इनिशियल है एकदम। अगर कोई भी एनजीओ अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को मानती है तो उसके पूरे एक्शंस में, या वो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, या फिर रिफ्लेक्ट होता है। सीपीपी हम बच्चों के राइट्स को और बच्चों की सेफ्टी को मैंडेटरी मानते हैं। ये पॉलिसी हमारा हर आकांक्षा का एम्प्लॉइज साइन करता है। हमारे लिए मैंडेटरी है कि पॉलिसी को फॉलो करना।
और बच्चे का कोई भी इमोशनल, सोशल, कोई भी तरह का एब्यूज नहीं होना चाहिए ये पॉलिसी के अंदर। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर कोई भी इसको क्रॉस करता है तो उसको सपोर्ट सिस्टम भी है, लेकिन उसको कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर बहुत हाई लेवल पे अगर ये हो रहा है तो उसके साथ आकांक्षा डील करता है। तो ये हमारा ये सीपीपी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, जो हमारे वॉलंटियर्स आते हैं आकांक्षा में उनके लिए भी मैंडेटरी है, और पेरेंट्स के लिए भी मैंडेटरी है। अगर पेरेंट्स बियॉन्ड वे जाके अगर बच्चों के साथ फिजिकल इमोशनल एब्यूज करते हैं तो हम इंटरवेंशन करते हैं। हम इतना स्ट्रांगली इंटरवेंशन करते हैं, काउंसलिंग ही एक पर्याय नहीं रहता है, तो हम सीडब्ल्यूसी के पास भी जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भी जाते हैं और उस केस को लॉन्च करते हैं। अभी मैं आता हूँ न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे। हमने सेफ्टी पे बहुत बात किया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वेलबींग पे भी हम बात करें। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, जिसको मैं बोलूँ एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जहाँ पे हमने बच्चों को हेल्दी देखा है, पेरेंट्स को हेल्दी देखा है, उनके नंबर्स को हमने हेल्दी देखा है। तो जब हम नंबर्स देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो एक जस्ट मैं जिस देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के बारे में कि हमारे अक्रॉस 1st to 10th स्टैंडर्ड बच्चों का हाइट वेट होता है, प्रॉपरली हाइट वेट होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रैकर है, ट्रैकर में डाटा फीड होता है और उससे हमको पता चलता है कि कितने बच्चे में अंडरवेट है और ओबेसिटी वाले। तो अगर पैंडेमिक देखेंगे तो बहुत सारा डाटा अगर हमको मिला था कि अंडरवेट वाले बच्चे बहुत थे। तो अंडरवेट जब बच्चे हमको मिल जाते हैं तो उनके साथ हमारा इंटरवेंशन प्रोग्राम है। तो हमने टाइप किया है, एनजीओस के साथ टाइप किया, हमने हॉस्पिटल के साथ टाइप किया। तो ये सारे बच्चे अंडर इंटरवेंशन प्रोग्राम में चले जाते हैं। पेरेंट्स के साथ हम ट्रैक करते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग होता है, डाइट प्लान होता है, पेरेंट्स को मेडिसिन भी दिया जाता है। तो ये सारा चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हम ट्रैक करते हैं। तो सोशल वर्कर स्कूल की तरफ से टीचर्स उसको ट्रैक करते हैं। अपर डेट स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर हम ट्रैक करते हैं कि एक जो मिड डे मील आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कितने अच्छे तरीके से, अगर मिड डे मील आ रहा है तो उसका क्वालिटी है क्या। तो हम किचन विजिट करते हैं, हम मिड डे मील टेस्ट करते हैं। अगर मिड डे मील अच्छा है, बच्चे अगर खा रहे हैं, तो वो एक हमारे पास ट्रैकर है। और अगर मिड डे मील खराब आ रहा है तो हम उसको चेंज भी कराते हैं। अपर डेट हमने एक शॉर्ट ब्रेक रखा है स्कूल में, मिड डे मील के अलावा भी एक शॉर्ट ब्रेक रहता है। शॉर्ट ब्रेक में बच्चा घर से कोई भी हेल्दी फ्रूट और हेल्दी फूड लेके आ सकता है। जंक फूड हम अलाउड नहीं करते। उसको भी स्कूल टीचर, हमारे यहाँ पे एक अच्छा प्रैक्टिस है कि स्कूल टीचर हमारे बच्चों के साथ बैठ के टिफिन खाते हैं। तो स्कूल के अंदर एक ट्रैकर है, वहां पे स्कूल टीचर ट्रैक करती है कि आज बच्चे ने लाया कि नहीं टिफिन। अगर लाया तो यस, नहीं लाया तो नो, और क्या लाया। अगर जंक फूड लाया तो रेड डॉट। फिर उस पेरेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग होता है, उसको ट्रैक किया जाता है और काम होता है। जैसे मैंने बोला न्यूट्रिशन प्रोग्राम हाइट वेट से शुरू हो जाता है, इंटरवेंशन पे चला जाता है और उसके साथ स्कूल सिस्टम में वो इन्वॉल्व है। अपर डेट हम पेरेंट्स के साथ न्यूट्रिशन मेलावा करते हैं। हमने व्हाट्सएप पे रेसिपीज बनाए क्योंकि पेरेंट्स के पास उनके खुद की रेसिपीज है और वो हेल्दी कैसे हो सकते हैं, तो उसका हमने कॉम्बिनेशन किया है। हमने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को लाया है, उनकी रेसिपी और पेरेंट्स की रेसिपी को हमने एक साथ बनाया है। उस रेसिपी को हम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेजेंट करते। हम फूड मेलावा लेते हैं, फूड मेला में पेरेंट्स अपने अपने रेसिपी लेके आते हैं और सब रेसिपी हम देखते हैं, उसमें से हम रेसिपी को अप्रिशिएट करते हैं। और हमने हमारा जो कैलेंडर है आकांक्षा का कैलेंडर, उसमें भी हमने रेसिपीज रखे हैं कि कौन सी रेसिपीज पेरेंट यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा और मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट वाला प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट होता है, पेरेंट्स का और बच्चों का बॉन्ड हो रहा है। और पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चा खा नहीं रहा है, तो इसकी वजह से बच्चे खा रहे हैं, स्कूल्स में भी खा रहे हैं, अटेंडेंस हमारा इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखोगे, अगर हम हेल्थ अच्छी है तो उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है। तो वो सारे रेशो अगर हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन वन ऑफ द मुझे लगता है वेलबींग वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ये सारे फोटोज है जहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा चाइल्ड सेफ्टी का पॉक्सो एक्ट है, पेरेंट्स उसको अवेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत हैप्पी फेसेस आपको दिख रहे हैं कि बच्चे अपने टिफिन के साथ खड़े हैं और टिफिन खा रहे हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रेशन में भी हम टिफिन थीम रखते हैं, जैसे 15 अगस्त आता तो कलरफुल थीम रखते हैं, नवरात्र में भी हम कलरफुल थीम रखते हैं। तो उससे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या जैसे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव जो स्पेसेस है, वो वन ऑफ द स्पेसेस है। उसको हम कैसे आउटरीच कर सकते हैं, उसको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, या बहुत इजीएस्ट वे में हम पेरेंट्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं,
या वो हम कम्युनिटी के लार्जर लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए है हमारे इवेंट्स और सेलिब्रेशन है। आप सबको तो पता है सेलिब्रेशन सबको पसंद आता है, तो सेलिब्रेशन में हम मैसेजेस डालते हैं। जैसे मैंने बोला नवरात्र आता है, गरबा है, तो नवरात्र में गरबा के साथ साथ हमारे पेरेंट्स न्यूट्रिशन फूड भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे स्टॉल रहते हैं वहां पे, हर जो कलर रहता है नवरात्र का उस कलर में पेरेंट्स फूड करते हैं। वुमेन्स डे है, अक्रॉस स्कूल्स में वुमेन्स डे होता है। हम वुमेन्स का सिर्फ जेंडर को लेके हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो वुमेन्स का हेल्थ, वुमेन्स का हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वन ऑफ द की कंपोनेंट है कि लड़कियां हैं, लड़कियों को पता कि मिथ्स है, हमारे घरों में मिथ्स है। यानी सादा पीरियड आता है तो मैं स्पोर्ट्स खेल सकती हूँ कि नहीं, अगर पीरियड्स आता है तो मैं घर में खाना को टच कर सकती हूँ। तो ये डायलॉग हमने मदर्स और गर्ल्स के साथ किया है। हमने स्पेसेस क्रिएट किए जहाँ पे मदर और गर्ल्स इसके ऊपर बात कर सके। तो अप्रोचेस है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके अप्रोचेस बदल रहे हैं। हमने हमारे जो गर्ल्स है ऑलवेज कंफर्टेबली, अगर स्कूल में अगर उनको पीरियड्स आते हैं तो कंफर्टेबली पैड मांग सकते हैं, अगर वो मेल है या फीमेल है तो वो इतना अप्रोच नहीं रहा। हमने ये भी कोशिश किया है कि अभी आपको हमने प्रोवाइड तो किया है पैड, लेकिन अभी आपको ट्रैक भी रखना है कि आपकी पीरियड्स कब आ रहे हैं, आपका सेफ्टी किट आपके साथ है क्या नहीं। तो मुझे बताने का वो एक जरिया था कि सिर्फ हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो हम उसके साथ उनका हेल्थ, हाइजीन और उनके मिथ जो बहुत उनसे रिलेटेड वो चीजें भी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने फूड फेस्टिवल बोला, फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। अपन डेट अगर आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे सतीश भाई ने बात किया था डोमेस्टिक वायलेंस में, तो डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द एक चीज है जो घर में है, और वो सिर्फ एक स्त्री को सफर नहीं कर रहे, तो पूरे घर को सफर कर रहे, और बहुत बार इसकी चपेट में बच्चे भी आ जाते हैं। तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हमारे वन ऑफ द स्कूल जो है उसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, किसी वो उन्होंने स्पेशल मदर मीटिंग लिया था। फिर मदर से डायलॉग होते होते हमको लगा कि फादर के साथ भी बात करना जरूरत है, एक स्पेशल फादर मीटिंग हुआ, और फिर उन्हीं फादर लोगों ने रैली निकाला और कम्युनिटी में उसको अवेयरनेस किया। हमारे मदर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ड्रामा बिठाया कि ये अब मेरी बात नहीं रही, ये सबकी बात है, तो हिंसा हम नहीं मानेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से ये ड्रामा अक्रॉस कम्युनिटी में हुआ। उसके बाद हम स्कूल्स में आए और स्कूल्स में हमने ओथ लिया। तो ये एक इनिशिएटिव था एक स्कूल की तरफ से, जहां से ये शुरुआत हुई। उसी स्कूल ने कम्युनिटी में, जैसे हम एक्सपर्ट नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो जो एक्सपर्ट एनजीओ है उसका हम मदद लेते हैं। तो स्नेहा फाउंडेशन को लेकर हमने कम्युनिटी में मीटिंग किया। हमने कम्युनिटी की एक वॉल थी, वहां पे हेल्दी फैमिली कैसे हो सकती है उसका हमने वॉल डिस्प्ले किया। एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कविता जी नेक्स्ट स्लाइड आप कर सकते हो। गौरी, जैसे मैं बताना चाहता कि ये कम्युनिटी वाला मीटिंग था जो डोमेस्टिक वायलेंस में हो रहा है, और ये वॉल है जब पीछे हमारे बच्चों ने वो डिजाइन बनाए थे हेल्दी लाइफस्टाइल के, और वो पीछे वाला जो ग्राउंड का वॉल है वो सबने मिलकर पेंट किया। तो ये परमानेंट वॉल रहेगा एक अवेयरनेस के लिए और सबके लिए। तो ये सारा इनिशिएटिव एक स्कूल की तरफ से शुरू हुआ, और अभी 4 स्कूल है जो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ काम कर रहे हैं। और स्नेहा फाउंडेशन है जो चेंज ट्रेनर वाला जो मॉडल है हम उनके साथ कर रहे हैं कि ये ट्रेन होंगे और उसके साथ ये चेंज मेकर बनेंगे कम्युनिटी के। तो प्राइमरी लेवल पे काउंसलिंग करेंगे, और सेकेंडरी लेवल पे ये सारे केसेस स्नेहा फाउंडेशन की जो सेंटर्स है वहां पे हम रिक्रूट करेंगे। तो एक नया हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सेम इसी की तरीके से हमारा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडिक्शन प्रोग्राम है जहाँ पे आपने देखा कि साइन हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट है जिन्होंने, डॉक्टर सोमिल है जिन्होंने सेशंस लिए, बच्चों के साथ लिए, पेरेंट्स के साथ लिए, हमारे साथ भी कैपेसिटी बिल्ड हुआ है। एडिक्शन को भी लेके हमने सिर्फ अप्रोच रखा है कि एडिक्शन भी फैमिली के हेल्थी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट करता है, बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करता है उसका। तो हमारे बच्चों ने जैसे कम्युनिटी में जाके ड्रामा भी किया था, और ड्रामा के माध्यम से उन्होंने अवेयरनेस किया था। तो ये साइमल्टेनियसली मैं सिर्फ ये 2 चीजें ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंस्टेंट है, मैं सारी चीज अब से हम बात नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली बाद में कभी भी आप हमसे, हमारी ईमेल्स आईडी है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, हम मैनुअल के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये 2 चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अपार्ट दैट एक थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट है जिसको हमने यूज किया था कि ऑलवेज हम ड्रामा यूज करते, नुक्कड़ यूज करते, स्ट्रीट प्ले यूज करते। टीओ जो था थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट एक नया माध्यम था जहां पे जब हम पेरेंट्स कम्युनिटी में ये ड्रामा लेके गए थे, हम पेरेंट्स के साथ जब ये ड्रामा लेके गए थे, तो यहाँ पे सोल्यूशन पेरेंट्स देते हैं।
हम उनके सामने ये सिचुएशन रखते हैं कि वो क्या ऑपरेस्ड है और इस ऑपरेस्ड में आप क्या मदद करोगे। तो यहाँ हमने CSA चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर बात किया, हमने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात किया और पेरेंट्स ने बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिया और पेरेंट्स उस ड्रामा के पार्ट बने। तो वो TO के माध्यम से हमने कलेक्टिव सॉल्यूशन पे काम किया कम्युनिटी के साथ और पेरेंट्स के साथ, और ये वन ऑफ द अच्छा टूल रहा। हमको पेरेंट्स को सिर्फ अवेयर नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स को एक्शन मोड में लेके आ रहे। तो ये हमारे प्रैक्टिसेस थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम ये TO जैसे मैंने बोला थिएटर ऑपरेस के कुछ पिक्चर्स है जो स्कूल्स के बच्चों ने पेरेंट्स ने किए थे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फोरम आपका है, हम तीनों ने बहुत देर से ही बात की आप लोगों के साथ। अच्छा लगेगा आने वाले 15 मिनट में हम आपके साथ बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप तीनों ने जो जितनी बात की है, इट्स क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव, क्लियर कि पूरा स्कूल एक कम्युनिटी का दिल है, हार्ट है। यू नो, इट्स रियली ट्रूली कनेक्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम सुनते हैं स्कूलों से कि टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, राइट? सो इतने कितने टच पॉइंट्स होते हैं आपके और कौन कौन इन्वॉल्व होता है, और आप अपने टीचर्स को कैसे कन्विंस करते हैं ये करने के लिए? शीतल दीदी आप बताओ, मैं बताऊं? ओके, डेफिनेटली जैसे एक टीचर्स के लिए ना बहुत सारे काम है। जैसे टीचिंग सेशन से लेके हमारे आप देखोगे रिपोर्ट्स भी आते हैं। हम BMC स्कूल के साथ काम करें तो रिपोर्ट्स है, उसकी ट्रैक्स भी है। लेकिन ना एक है ना कि आइसोलेशन में नहीं होगा, सिर्फ एजुकेशन के साथ नहीं होगा। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो सोशल इमोशनल के साथ साथ वेलबींग, और ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमारा, जैसे सतीश भाई ने स्टार्ट किया था होम विजिट हमारा सबसे पहला एक की पॉइंटर है, जहाँ पे टीचर्स होम विजिट करते हैं और फिर वो समझते हैं कि घर क्या है, घर के इश्यूज क्या है, स्कूल का बैकग्राउंड क्या है। जब वही बच्चा आता है तो उसको देखने का अप्रोच बदल जाता है। तो वो हमारा एक रैपो बिल्डिंग वाला, एक्सेप्टेंस वाला हम बोलते हैं ना, रैपो बिल्डिंग और एक्सेप्ट करना एक दूसरे के साथ। और जब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बनती है तो काम कितना अच्छा बनता है। ये जब सेंसिटाइज होता है टीचर्स को, तो टीचर्स बहुत विलिंगली करते हैं। देख, सोशल वर्कर काउंसलर हम लोगों का तो रोल है, तो वो हमारे लिए सिर्फ लाइफ हम बोलते हैं नॉलेज अपडेट करना, स्किल अपडेट करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन टीचर्स के लिए माइंडसेट और अप्रोच पे हमारा काम होता है। और जैसे शीतल है, मैं हूँ, हम लोगों के पीडीज भी होते हैं। तो पीडीज में टीचर्स के साथ जब पीडीज होते हैं तो हम सोशल इमोशनल इन सारी चीजों पे बात करते हैं। तो वो एक सेंसिटाइजेशन का जरिया है और उनके कामों के साथ साथ हम उनको इन्वॉल्व करते जाते हैं या हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स पे, और बहुत अच्छा टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। या मुझे सिर्फ और ऐड करना था कि ये एक जर्नी है। जो भी टीचर्स आकांक्षा में रिक्रूट होते हैं, जब भी उनका इनिशियल ट्रेनिंग होता है तब से ही काम शुरू होता है। उनको सिर्फ क्लासरूम में कंटेंट सिखाना या करिकुलम सिखाना वो उनका जॉब नहीं है, वो उनको पहले ही हफ्ते क्लियर हो जाता है। Akanksha teachers have to be champions of socio-emotional learning, parents as partners, and academic excellence. So उनके टीचर्स के गोल सेटिंग होती है जब भी स्कूल में, तो उनकी गोल सेट सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस पे नहीं होती, लेकिन सोशो इमोशनल स्पेसेस में उनका वो कैसे सपोर्ट करेंगे, वो पेरेंट्स एज पार्टनर्स में कैसे सपोर्ट करेंगे, ये तीनों एरियाज में गोल सेटिंग। तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। कोई टीचर ऐसे नहीं कह सकते कि ओ बट ये मेरा काम नहीं है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि एकदम इजीली हो गया। अभी भी वी हैव अराउंड 800 टीचर्स। सो 100% 800 टीचर्स शायद 100% इन्वेस्टमेंट नहीं है, but it's work in progress. One is, as an organization, we understand that for Akanksha School, only teaching learning or content related is not an Akanksha School. ये सभी तीन domains, जो parents and as partners, socio-emotional learning and academic excellence, ये तीनों ही स्कूल को effectively करनी चाहिए।
स्कूल माने टीचर्स, स्कूल लीडर, सोशल वर्कर, काउंसलर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सब ने एक साथ. तो ये ऑलरेडी माना हुआ है, तो उनको देयर इज नो वे आउट ऑफ इट. यस, इन्वेस्टमेंट बिल्ड करने के लिए, जैसे राकेश भैया, शीतल, सतीश भैया बोल रहे हैं, टाइम लगता है, ट्रेनिंग्स होते हैं. देयर आर सम टीचर्स हु फील लेकिन दिस इज अ लॉट ऑफ बर्डन, ये बहुत सारा, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं या मैं फ्रैक्शंस पढ़ाऊं या बच्चों का इमोशनल चेक इन करती रहूं. सो देयर आर दीज इंस्टेंसेस जब भी हमको डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसको हम केस बाय केस अप्रोच करते हैं. वो टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, टीचर्स को अलाइन करने के लिए सपोर्ट करते हैं. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक एंड गोल नहीं है, और हम एंड गोल कभी रीच भी नहीं कर पाएंगे कि 100% टीचर्स इन्वेस्टेड. लेकिन as a system, as a policy, it is an expected thing from Akanksha teacher. So, I mean, like, yeah, Sheetal, you also wanted to speak. Yeah. Actually, the other aspect I think is, that when teachers actually see and hear parents talk about how this whole student well-being or the support that they get, or these areas are actually helping them out, I think that also motivates the teachers, and they buy into it, or there is a mindset shift in a lot of teachers to see the importance and then to take it up and start working. So I think that is a very, very important aspect, because it is like someone talking about things experientially really helps. So seeing that shift in students, parents, and they talking about it also acts as a motivation for teachers to take this on. Do you collect these case studies, Sheetal? Do you sort of put them together for training of teachers? Do you have some of these stories that you tell about different children over the years, what you've seen happening? Like the lovely story about the child who's supporting his parent at home because of that connection that you made. Right. So are there such stories that are used in the teacher training as well? Do you have a stock? Yes. So it's like we have a lot of we do have a lot of stories like that, and in a lot of our trainings we involve alumni, we involve student voice. We have students also sharing their experiences, not only in terms of how it has helped, but how it can develop and how it can, what more would they want. So I think that, and that's also like we have a lot of such instances, and we share it with our teachers, and we have students talking about it as well. So whenever we have trainings, we do use these. I'm encouraging anybody else who would like to, you can just unmute and ask the question or make a comment or share your own space, what you do in your own spaces, in your own schools. Should I just wait a little for anyone else who would like to say something? We would love to hear actually if someone is using any other spaces or has any other ideas. I mean, that would really help. Okay, I think Payal has left. She had put a comment in the chat saying that she's happy to hear this because they also do similar work, so that's nice. Yeah. Thank you, Neeta. Yeah, I think, while I'm sure that everybody is absolutely amazed by the comprehensiveness of what you do. Like I had said that the family and looking at physical education is also part of it. I didn't see too much on that. So I'd like to speak a little more. I'd like you to speak a little more about how do you ensure children have access to physical movement, health in that sense, right? So. Yeah, so we have like this, we have PE slots, and the PE slots in Akanksha don't only mean a sports period, but they focus on a lot of other, like how do you build a team, how do you make a team stronger. They have other, the PE itself, the curriculum itself is inclusive of a lot of other aspects of physical well-being. So we drive that through the PE curriculum. The PE teachers drive that through the PE curriculum, which they themselves design actually.
with the help of their lead. So we focus on that. In fact, we also find ways of integrating children with special needs into using the PE class to support them, and how that can be done so that they do not feel isolated. So that it's absolutely a separate program itself, which focuses on a lot more than just the physical education aspect. And for physical well-being, like Rakesh also mentioned, we have the PE teachers are also involved in the nutrition program, where the height, weight of the child is taken, and we have a database where we collect children who have malnutrition, and how do you want to work on them. And then we have food programs across schools, where the parents are actually told what will the child get for a midday meal. So one day is like dedicated to green leafy vegetables, one day it is sprouts, and we have like we also give out recipes which are quite easy to make at home and don't cost much as well. So all that is kind of integrated and included in the nutrition program, which the PE teachers and social workers also drive. मैंने फोटोज में देखा आपके पेरेंट्स में मदर्स तो आ ही रहे थे, पेरेंट्स में फादर्स को कैसे आपने अंदर लिया? दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. What is the way in, because most schools say के टाइम नहीं लगता है, लोगों को काम करना पड़ता है, आते ही नहीं है पेरेंट्स. So how do you get the parents in? मैम हम स्पेशल फादर मीटिंग बोलते हैं उसको. वन ऑफ द हमारा वो की फैक्टर है कि जैसे आपने बोला कि फादर्स लोग ज्यादा करके वर्किंग है और उनका टाइमिंग मैच करना वो हो जाता है. तो जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो नेशनल हॉलीडे है, तो उसको हम टैप करते हैं और उसमें हम फादर्स को इन्वॉल्व करते हैं. अपार्ट दैट हमने ना क्रिकेट टूर्नामेंट ऐसे जो एक इनिशिएटिव्स लिए थे, कबड्डी इनिशिएटिव्स लिए थे, जहां पर हमने फादर्स को इकट्ठा किया था. और चाय इकट्ठा जैसे हमने बोला, जहाँ पे हमने फादर्स को इकट्ठा किया था, और वहां से वो जो एनर्जी है फादर्स लोगों की, तो हमने बूस्ट करना शुरू किया. और फिर वो हमारी फादर सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं रही, उनका बोलते ना काफिला बढ़ता गया. अभी बहुत सारे हमारे फादर्स हमारे साथ इन्वॉल्व है. हमारा वन ऑफ द स्कूल जिसने वो उस फादर्स को सुपर डैड नाम रखा है कि यू आर हमारे सुपर डैड. जैसे मम्मी है उनको हमने सुपर मॉम नाम रखा है कि आप सिर्फ हमारे लिए खेलने के लिए नहीं आ रहे. बहुत सारे स्कूल्स में फादर्स कैरम खेलने आते, चेस खेलने आते, कि पेरेंट्स भी खेल रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ खेल. तो उनको हमने सुपर डैड सुपर मॉम का एक नाम रखा है कि आप सिर्फ खेलने नहीं आ रहे हो, आप बच्चों के वेलबींग और सेफ्टी के लिए उनके ट्रस्टेड एडल्ट. ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जहां से हमने फादर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया, और अभी वो रेशियो बहुत अच्छा है फादर इन्वॉल्व. And in addition to that, we see the impact of this activity. Male parents like cricket a lot, so we use that as a tool, and we initiated cricket tournaments for the parents. And the alumni students who are not like the part of school now, वो पेरेंट्स अभी भी स्कूल में आकर बाकी के बच्चों की ट्रेनिंग्स क्रिकेट की ले रहे हैं. सो इट इज हैपनिंग इन फ्यू स्कूल्स कि जो पेरेंट्स क्रिकेट में हमसे जुड़े थे, अब स्कूल में आकर हमारे बच्चों की क्रिकेट प्रैक्टिस ले रहे हैं और वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक बात हुई है कि एंगेजिंग पेरेंट्स थ्रू स्पोर्ट्स. थैंक यू. Wonderful. Yes, Shita. Also, what I've noticed, be it any of our schools or be it schools like any of the other conventional schools as well, it is a body language that I have noticed when parents, as in father and mother, walk inside the gate. The father automatically takes a back seat and walks like behind, and the mother takes on the role. So I think it is a general feel कि schools जो है वो mother का डोमेन है एंड मदर्स ने जाना चाहिए. ये चाहे कोई भी क्लास क्यों ना हो सोसाइटी का, ये एक चीज ये मैंने ऑब्जर्व की है. एंड आई थिंक सो वन थिंग व्हिच वी डिड was that, and not only about school, even in a lot of other areas, a lot of responsibility of the child is automatically taken up by the mother, and it is believed to be the mother's responsibility as well. So what we did was we also had a parent meeting with the fathers separately, where we actually, in a progression of meetings, told them about the important role that they play in a child's social and emotional development, and their importance
as a member of the family and their importance in the child's life, going just beyond being breadwinners or the role that they have assumed, and how they can actually connect to their children and what children actually expect from them. So we had actually taken videos and we had actually, played them in these meetings, keeping anonymity in place. But and children had spoken about what they expect from fathers and how they want to spend time with fathers. And for some of the fathers, it was like an eye opener, because they had no clue that, this is what the children expected from them. So, having meetings like these and activities like these, I think, is where we gradually started bringing a change in mindset where fathers were concerned and involving them. Fantastic. I think it's been a very, very interesting session. I think you've got that feedback on the chat as well. I hope everybody will please fill the form, the feedback form. I think you've seen a lot of effort has been taken to put this together for you, and the sharing has been done with you in a very frank and beautiful manner as actual practitioners for whom I'm sure कि आपका school सबसे ज़्यादा चाहता school होगा ना, for all the children must be wanting to get into Akanksha schools. Look at the place where we can get this kind of access and support, well-being is taken care of in this manner. It's amazing. So I hope that we can also put the feedback in for the speakers today, and it would be really, really nice if everybody filled that form. Yeah. So thank you. Thank you, all of you. I think thank you, Akanksha, also for having this sharing and being part of the community of practice. And it's just lovely to see everybody participating. You're getting a lot of thanks on the chat, so you can have a look at that, but we hope that the feedback also comes to you. And we look forward to seeing all of you again in the next community of practice. We've got Shubhadra Shenoy talking about what is the practice at Little Angels. And it's about the voice of all the stakeholders and a democratic space being created for them. So we want to see all of you back in again at the next session. I hope that you will also spread the word to others. Like I said, this is a practitioner's voice, the most important voice in education. So please participate and please do whatever you can to make it a very, very large community. Thank you. Thank you, all of you. And thank you, everyone. Thank you, Kavita, for giving us this opportunity to share. And thanks to all the participants for being interactive and participating, and looking forward to the feedback and attending many more sessions with Adhyayan. Awesome.